खाना खाना तो सबको बहुत पसंद है, पर जब बनाने की बारी आती है तो लेट्स स्विगी. Hi everyone, welcome to Business Bite. My name is Shivalika and today we are going to talk about how this popular food delivery app Swiggy makes money. क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं देन वी हार्डली पे अ डिलीवरी चार्ज ऑफ अराउंड ₹20 to 40 और शायद वो भी कभी कभी नहीं. देन हाउ स्विगी does the app operations, pays its delivery guys, packaging, customer care services and all these other things. How Swiggy ultimately generates its revenue. So this video is all meant to unfold the sources of revenue of Swiggy and let you know how Swiggy is making its pockets deeper and deeper. The first source of revenue for Swiggy is commission. Swiggy typically charges a commission rate of 15 to 25% on the total bill value that the restaurant receives. Also, ये पूरे बिल पर लगता है which is also inclusive of the GST and the commission rate also varies depending upon the frequency of orders received by the restaurant, the location of the restaurant, dependency of the restaurant on the Swiggy and etc. अब आपको लग रहा होगा ये हमने सोचा क्यों नहीं. So moving on to the second source of revenue is delivery charges. We usually see that delivery charges are around 20 to 40 rupees, but they also vary according to certain factors depending like weather conditions. अगर किसी दिन बारिश हो रही है, कोई स्पेशल ओकेजन है जैसे कि दिवाली, या फिर मिडनाइट डिलीवरी हो रही है. इसका मतलब ये है कि स्विगी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. The third source of revenue for Swiggy is advertising. Swiggy has two advertising models like banner promotions and priority listing. In banner promotions, restaurants are being displayed on the app or website pertaining to regions. So, if you want your restaurant to be advertised on the front page of the app of the customer, you need to pay certain amounts to Swiggy. Also, do you wonder, क्या आपने कभी सोचा है, suppose if you have a restaurant और आप उसको स्विगी पर लिस्ट करा देते हो, then what is the probability of you getting the maximum orders or how you will get into the eyes of the customers? Well, ये सब priority listing का खेल है. If you want your restaurant to be listed to the top as soon as the customer opens the website or the app, you need to pay certain priority listing amount to the Swiggy. Therefore, आपका मुनाफा स्विगी के मुनाफे से गुजर कर निकलता है. So for now, Swiggy founded a new mode of generating its revenue, that is through Swiggy restaurants. क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से बेनिफिट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द स्विगी ने सोचा कि क्यों ना वो खुद के रेस्टोरेंट्स लेकर आए. एग्जाम्पल्स ऑफ स्विगी रेस्टोरेंट्स आर द बोल कंपनी एंड होमली. स्विगी एक्सेस एक बहुत ही यूनिक मॉडल है जो स्विगी फॉलो कर रहा है. इट इज़ अ क्लाउड किचन मॉडल जिसमें उसने एक बहुत बड़ी किचन ली और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स को अलाउ किया कि वहाँ पर वो अपना स्मॉल किचन सेटअप कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑन दोज प्लेसेस वेयर देयर रेस्टोरेंट इज़ नॉट प्रेजेंट. हेंस स्विगी इन सब के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करता है रेस्टोरेंट से बिकॉज दे आर एबल टू प्रोक्योर orders from places where it is not there. Hence, this is another way through which Swiggy is making its pockets deep. Another a bit popular source of income for Swiggy is Swiggy Super. अगर आप एक रेगुलर कस्टमर हैं स्विगी के, दैट इज़ यू ऑर्डर अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑब्वियसली आपको डिलीवरी चार्ज थोड़ा तो चुभेगा, दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू फूड मोर. Therefore, Swiggy ने एक solution दिया है, buy that Swiggy Super membership and get all your orders delivered free of cost for one entire month. Therefore, आपका एक कंज्यूमर बिहेवियर भी थोड़ा ऑल्टर हो जाएगा और स्विगी की कमाई भी हो जाएगी.
So another and last source of revenue for Swiggy is affiliate income. Swiggy has started to partner up with financial institutions to get a little outside of its core business to offer credit cards to its customers. It has partnered up with ICICI Bank, Citibank, HSBC, etc. Therefore, Swiggy is offering financial aid or credit card services to its customers. So now totally aware of how Swiggy is making money, like, comment, share and subscribe to our channel Business Bite and press the bell icon to stay tuned with such interesting updates.